बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th इंग्लिश क्लास। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो जो प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 6 की ट्रांसलेशन कंप्लीट की थी, आज हम यूनिट नंबर 6 के ही क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो आपने अपनी कॉपी रेडी करनी है, मार्शल लाइन ड्रॉ करें, डेट एंड डे मेंशन करें, यूनिट का नंबर एंड यूनिट का नेम दोनों मेंशन करने हैं। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर है वो पेज नंबर 72। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपने एक्टिविटी ए लिखनी है। क्वेश्चन आंसर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ इज अ न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़। आंसर लिखिए इसका। न्यूज़पेपर इज अ मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़ because it does not require its readers to sit at a place and read the news। दोबारा इसका आंसर सुने। न्यूज़पेपर इज अ मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़ because it does not require its readers to sit at a place and read the news। Question number 2 is how does a viewer get restricted while watching TV news। आंसर लिखिए। Television requires its viewers to be at a certain place, comma, at a certain time in order to watch and listen the news, full stop। They cannot choose to read and listen it on the move, 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 or throughout the day, full stop। They cannot even choose which piece of news they want to skip। दोबारा आंसर सुने इसका। टेलीविजन requires its viewers to be at a certain place at a certain time in order to watch and listen the news। They cannot choose to read and listen it on the move or throughout the day। They cannot even choose which piece of news they want to skip। Question number 3 लिखिए। In what way viewing news on TV is easier than reading a newspaper। आंसर लिखिए। We can view the news with a little or no effort, or ठीक है, or no effort, since it is particularly a form of entertainment, full stop। It broadcasts the news as it is happening, full stop। A person with a basic knowledge of the broadcast language will be able to view and understand it, full stop। Question number 4 is how do newspapers give us more in-depth coverage। आंसर लिखिए। न्यूज़पेपर्स give us more in-depth coverage by providing us views and analysis of experts। ठीक है, न्यूज़पेपर्स give us more in-depth coverage by providing us views and analysis of experts। Question number 5 is why do some people read more than one newspapers। आंसर लिखिए। Some people read more than one newspaper to get different viewpoints of the incidents and check for its validity
अगर आप इंसिडेंट लिखेंगे INCIDENT इंसिडेंट, तो आगे आपने इट्स वैलिडिटी लिखना है। अगर आप एस लगाएंगे इंसिडेंट्स के साथ तो फिर आगे देयर आएगा THEIR, ठीक है। Some people read more than one newspaper to get different viewpoints of the incidents and check for their validity, ठीक है। अगर आप इंसिडेंट्स लिखेंगे तो their validity होगा। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 6, how can readers give feedback to the newspaper articles? आंसर लिखिए, readers can give their feedback to the newspaper articles by writing to the forum page. Readers can give their feedback to the newspaper articles by writing to the forum page, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, which medium do you prefer for news? Why? आंसर लिखें, I give equal importance and preference to newspaper and television for their good points and specialties. For their good points and specialties. Next heading the additional questions. Question number 1 है, what is good thing about newspaper? Answer लिखिए, the one good thing about newspaper is that we have no restriction of time and place to read it. Question number 2 है, how does television make us lazy? Answer लिखिए, television makes us lazy because we have to make no effort to view programs on TV. Question number 3, have you ever given your views on any article? Answer लिखिए, no, comma, I have never given my views on any article. Question number 4 है, which simile has the author used and why? ठीक है, आंसर लिखिए इसका। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, which simile has the author used and why, ठीक है। आंसर लिखिए, the author has used the simile of fast food for television and a 10-course dinner for newspaper. Full stop. These mediums are so because both have its strength and lacks. ठीक है बच्चों, ये इसके यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। इनको बहुत अच्छे से आपने रीड डाउन करना है, ठीक है, और अपनी नोटबुक पे भी अच्छे तरीके से राइट करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।